Hello children, welcome you all in economics class. In this lecture, we will learn certain aspects of economics. We will learn that what is nature of economics, number one. Things which we are going to learn after this lecture, you will be able to understand nature of economics, number one. Number two, positive and normative economics. Number three, micro and macroeconomics. Number four, economic system. And if time is left, then we will learn central problems of an economy. Children, these all topics are very important from the point of view of examination as well as higher study of economics also. So you all watch this lecture till end. Okay, so let us start from the topic nature of economics. Children, when we say nature of economics, there are different views in this regard. Few people say that economics is science. Few people say that no, economics is art. Of late, one group is claiming that no, economics is profession. But our discussion will primarily be based on that whether economics is science or art. Children, before you decide or before we conclude that whether economics is science or economics is art, because it is not an easy task. Okay, first of all, we have to understand what is science and what is art. Without understanding this, we cannot. In this regard, I am telling you a small story. When I was a student like you, not junior, we were at class 4-5 level. We have heard that diamond is there, and if you take diamond in mouth, you will die because there remains poison remains there. Okay, one day in school, one of our friend, he brought a finger ring and he said, देखो ये डायमंड है, बहुत चमकता है, छुओ मत इसको, डायमंड है. और he used to threat us कि देखो ज़्यादा करोगे मुंह में डाल देंगे अपना ये अंगूठी तुमको तुम्हारे मुंह में, बस मर जाओगे. We all were afraid, but at the same time curiosity was there. अरे ये चमकता है, डायमंड कैसा होता है, चलो धूप में ले चलो इसको. We offered our lunch to him. नाश्ता ऑफर किए, भाई तुमको अपना नाश्ता कराएंगे हम लोग, चलो ये दिखाओ हम लोगों को. उस वक्त पॉकेट मनी तो होती नहीं थी, फिर भी उन्होंने कहा कि देखो यार कल तुमको हम लोग बाहर में आलू चाट खिलाएंगे 25 पैसे का, दिखाओ अंगूठी कैसी है. और वो डोमिनेट करने लगा हम लोगों पे, क्योंकि हम लोगों ने कभी डायमंड देखा ही नहीं था, सुना था, तो जो बोलता था विश्वास करते थे. बात तो होते होते हमारे क्लास टीचर के पास पहुंच गई. मैम ने कहा क्या माजरा है, क्या मतलब है. तो दोस्त जो मेरा था, नाम लेना अच्छी बात नहीं है अभी, मैंने कहा कि मैडम उसके पास डायमंड है, हीरा है, और वो दिखा नहीं रहा है, बोलता है मुंह लेने से मर जाता है कोई. डांटी मैडम, दिखाई, लाओ इधर. मैडम मांगी और देखने के बाद फिर हंसने लगी. बोली ये डायमंड नहीं है बेटा, ये अमेरिकन डायमंड है, ये चमकता है डायमंड की तरह ही, लेकिन डायमंड नहीं है. और फिर बाद में ही क्लियर आउट मिसकॉन्सेप्शन की डायमंड छाटने से कोई मरता नहीं है.
Why it happened? Because we were not knowing what is diamond. He said that this is diamond, and we believed that this is diamond. Similarly, if you say economics is science or you say economics is art, first of all, you have to understand that what is science and what is art. विदाउट अंडरस्टैंडिंग ये साइंस क्या है या आर्ट क्या है, आप कंक्लूड नहीं कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक आर्ट है. यू कैन नॉट. तो पहले जानना होगा कि साइंस क्या होता है, आर्ट क्या होता है. वी विल नॉट गो इन डिटेल बट ब्रीफ वी विल हैव. सो फॉर ए subject to be identified as science, there are certain prerequisites which are to be fulfilled. कुछ prerequisites हैं जिसका कि fulfill होना जरूरी है. Then only that subject will be identified as science. Okay. For a subject to be identified as science, following prerequisites are to be there. क्या क्या चाहिए? अगर बोलते हो कि एक सब्जेक्ट साइंस है तो क्या क्या चाहिए? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर. एक वेल डिफाइंड सब्जेक्ट मैटर चाहिए. मीन्स its subject matter should be well defined, that what to be studied. Now you test in natural science like physics, chemistry, bio, you see that there is well defined subject matter, that living things will be studied in bio, non-living things in physics and chemistry. Again you will see that liquid and gaseous elements will be studied in chemistry, solid in physics. Similarly in bio also there is a division of botany and zoology. Do you study this Jyotish Shastra in bio? You don't study. You don't study about cell division in physics, and at the same time you don't study about traveling of light in chemistry and biology. Okay, so well defined subject matter is there. Now from this angle, if you see that whether economics is science or not, whether economics has well defined subject matter or not. To some extent, yes, economics has a well-defined subject matter. Like nowadays, it is very crystal clear, and compartmentalization has been done, segmentation has been done. But still, there is debate. There is debate, and that what to be included. Because economics still is in a growing phase, and we say that it is inclusive subject. Means whichever subject you feel that it is going to benefit us, whichever subject you, whichever topic you feel it is to be analyzed from economic point of view, economic angle, you include in economics. Of late, it means till 1996, environmental science was, environmental economics was not the subject matter of economics. But after the Rio de Janeiro Earth Summit, this environmental economics got added into economics. Similarly, you see that there is overlapping between the subtopics which you study in geography and economics.
one question, very famous question, a statement of Mahatma Gandhi that Earth has enough resource to satisfy the need of everyone, but not the greed of even one. This question is asked in geography as well as in economics in class 10. So, if you compare it, economics with natural science, as far as this well-defined subject matter is concerned, it is not as watertight compartment like. Here in natural science, there is watertight compartmentalization, watertight segmentation of the subject matter, but in economics, it is not like. So, from this point of view, you can say that yes, economics is having its own subject matter, but it is not as rigid as in case of natural science. So, we cannot say that economics is pure science like other natural sciences. Number two, cause and effect relationship. Cause and effect relationship. This is one of the essential prerequisite for a subject to be identified as science. Means if something happens, then its outcome should be there. If some cause is there, then its effect must be there. Okay, and that is the most important prerequisite of a subject to become science. Otherwise, a subject cannot be declared as science. Cause and effect relationship. Like if you add CO2, you say carbon and oxygen, to carbon and two oxygen. If you mix it, you will get what? You will get carbon dioxide. H2O, two hydrogen, oxygen, you mix water, you get. Okay, so a cause and effect relationship is there. In chemistry, chemistry lab in class 10, litmus paper, through litmus paper, you may have tested. In physics, you bang a ball on the wall, and at what speed it will revert back to you, it is well defined. So there is cause and effect relationship. In economics also, there is cause and effect relationship. Like in law of demand, you will discuss that if there is a decrease in price of a commodity, other things remaining the same, what will happen? There will be increase in demand of consumer. In macroeconomics, you will study that if there is an increase in aggregate demand of the country, it will ultimately result into increase in national income of the country. So, cause and effect relationship is there. But again, what I say, it is not as rigid as in case of natural science. For example, if you mix two chemicals in particular ratio, what happens? Outcome will be same. Time and again you do it, outcome will be same. If you throw a ball on a particular surface at a particular speed, and time and again you repeat it, same result you will get. But in economics, you may not get same result. Like in law of demand, we say price increases of a commodity, its demand, quantity demanded will come down. But it may vary. Person to person, it may vary. With the time, it may vary. For example, this right now corona pandemic is there, and complete financial uncertainty is there, particularly in academic field. So those who are engaged in this academic field and those who are getting their bread and butter through teaching and other teaching related activities, they are very uncertain about their future.
very uncertain about their income. So, what is, even if price of a particular commodity increases, their demand for that commodity may not increase. Instead of increasing, it may decrease. So, cause and effect relationship is there, but there is if and but associated with it. Uh, it is contingent to many factors. Like science also contingent, relation or outcome is contingent to many factors. But in economics, same output you may not get always. If you like in natural science, one cause, same effect always. In economics, you cannot expect that always. Okay, so again, you say that cause and effect relationship is there, but it is not like natural science. Then, development of principles and theories. In science, when you do experimentation, why do experimentation? You do experimentation to do find out certain principles, develop certain principles, to perform certain theories. For that, you do experimentation. Right now, all over the world, scientists are engaged in doing experimentation. For what? To have COVID vaccine and medicine to treat persons who are infected with COVID-19. So, principles and objectives are the development of the principles and objectives, the primary objective in science and scientific experimentation. Here in economics also, whatever we study, we develop principles and theories. Like in applied economics, in what you say right now, suppose Indian economy, consider macroeconomics, we collect data, you have to study statistics. You collect data and you see what is going on, and on that basis, you develop principles. Like when Amartya Sen developed a fat theory, and he said that in a particular area, what is that his theory? He said that in a particular area, if there is any pandemic, not pandemic, any natural disaster, in any particular area, if there is any natural disaster like earthquake, flood, okay, so people die there, but main cause is not that they die due to earthquake and flood. Some people die, but more people die because there remains lack of a supply of essential goods in those areas because of earthquake and this flood. So, administration should ensure the moment there is any natural calamity, administration should ensure that essential supply is maintained there. Okay, that is the theory, fat theory, and following that in Latin American countries, African countries, Asian countries, government could minimize casualty due to this natural disaster. So in economics also, we develop theories like principles we develop, law of demand is developed, elasticity of demand is developed, cost theory of cost is developed, theory of production has been developed, theory of international trade has been developed, theory of balance of payment has been developed. Okay, like monetary theory has been developed, growth and development theories have been developed. So from this point of view, you can say that if on this parameter only economics is judged, then it is science. Then controlled experimentation. Controlled experimentation means in science, various theories and principles, they are developed, they are judged, they are verified in a completely controlled environment.
If there is lack of control, then disaster can happen. This COVID is the outcome of that. In Wuhan lab, there was no proper control, and result you can see. Okay, so controlled experimentation is there in case of this natural science like physics, chemistry, bio. In economics also experimentation is there, but it is not as controlled as in case of natural science. So, from this point of view, economics is not as pure science as natural science. Next is universal applicability. Universal applicability. What I mean to say that what outcome you get here in India in biolab or chemistry lab, same outcome you will get in USA also, in the US lab also, if the same parameter is kept. Like COVID vaccine is being developed. Scientists are working in China, in England, in Israel, okay, in USA, in Germany, France. But if any vaccine is developed at any part of the world, it will be applicable for whole world. Okay, because one thing I would like to say about natural science in bio, you know that I am different from other, you are different from other, all each and every person, they are different from each other. Why this happens? This happens because of the genetic variation. Okay, and you will be surprised to know that 99.99% gene of each of us, of everybody in the whole world is same. 99.99%. Only 1%, 0.01% variation is there, and due to that 0.01% variation, there is variation among us. Okay, so what we say that universal applicability, that whatever suppose oxygen and carbon dioxide and carbon is mixed, then CO2 you will get, hydrogen and oxygen you mix, water you will get in the same particular proportion. It is not that in India you get water and in America you get diamond. No, same thing you will get. As far as economics is concerned, as far as universal applicability, okay, to some extent it is there, but there is a variation. A particular thing, a particular law which is applicable in our country may not be applicable in America. There may be variation in certain theories and principles, that the thing which you apply for removal of poverty in India, that may not be applicable in USA because of the variation in nature of poverty at both the places. So from this parameter also, we cannot say that economics is science. So in this regard, we can, if it is asked whether it is science or not, so on each parameter you will write, and ultimately you will write, that economics is close to science. Economics is closer to science, but is not pure science. But is not pure science. Economics is closer to science. It is close to science, but it is not a pure science. This fact we have to understand. Okay. This is discussion, and whatever we say, we cannot compare economics with natural science. Natural science, there are three only: physics, chemistry, and bio. And whatever other branches are there, they have bifurcated from these natural sciences. Okay, so we concluded that economics is not pure science. It is close to science, but not a pure science. This we have concluded. Now,
Now we will discuss economics as an art. Economics as an art. When we studied economics at graduation level, we were considered as the student of art. And those who studied physics, chemistry, mathematics, or bio, they were considered as the student of science. Now, new education policy has come. It has been approved by the cabinet also, and as per the new policy, there will be no hard and fast segmentation now. If in class 12 you wish to study chemistry, history, and economics, you can study. Okay, whatever subject you like to study. So, but you are not going to get advantage of that because your juniors will get advantage of that. Now, question is, economics is art. If it is, then how can we say it is an art? So, what is art? What do you mean by art? How a subject is considered that whether the subject is art or not? So, like for science, for art also there are certain prerequisites. What are those prerequisites? Number one, possession of certain specialized skills. Possession of certain specialized skills means आपके पास कुछ स्किल होना चाहिए, कुछ एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए. Then that subject will be considered. As far as economics is concerned, yes, it is art because whatever skill we are having, whatever technique and orientation we are having, we apply that. Because second, in economics you can see that many experts are there, many thinkers are there who are economists and those who were with a specialized skill and knowledge, and they could propound it. Gaining knowledge is art, and you study and you gain knowledge. Okay, so from this point of view, you can say economics is an art. Number two, for a subject to become art is, number two requirement is that practice of theoretical knowledge. Whatever theoretical knowledge you have gained, you practice. You use it in actual practice. So that actual practice is necessary. In economics, you see the economists, whatever theories or principles they have developed, whatever theories principles they developed, they used it to solve economic problems. Like J.M. Keynes developed general theory, and that general theory, 1936 he written the book and developed general theory. But still his theory is being used to maintain balance in economic system. Okay, so application, practice of the theoretical knowledge. Now, third is application in practice differ from individual to individual, means subjective. Same thing, like suppose
economic theories are there. Certain planners, certain administrative officers, they implement that in a better way, but everyone, they are not able to do that. Like a painter, some painters like Mapuzan, his one painting for 1 crore, his way of expression was different, not for all similarly. So, in economics, we find that certain economists they are very great, they are considered great because of their personal ability and personal efficiency, and they could scale high. Okay, so this is found in economics. So, economics, you can say that economics is closer to art, and it is in fact art. In fact, economics is an art. This is true. Okay, economics is an art. In this regard, Alfred Marshall has very rightly said. Alfred Marshall said that economics is oldest of art and newest of science. Still, it is queen of social science. He used the term social science. He considered, okay, this is science. Economics is also a science, but it is not a natural science like physics, chemistry, bio. It is social science. Economics is social science, he concluded. Okay, so you can say economics is not a natural science, but it is a social science. Okay, so when a question comes whether economics is science or art, we can say that economics is not a pure science like natural science. It is close to science but not a science. Economics is art in fact. Economics is art, but it has a scope to become science, and it is moving towards that direction. And that's why in many universities, when you go to do graduation in economics or masters in economics, you get BSc degree or MSc degree. Okay, now next topic is our next topic is positive and normative economics. Our next topic is positive and normative economics. Okay, we will discuss whether economics is a positive science or normative science. So first, economics as positive science. Economics as positive science. Okay. What is positive science? First of all, we have to positive science is concerned with inquiry of facts only. Positive science is concerned with inquiry of facts only. That is what is
It is not a subject which discuss the merit. No, a subject is referred as positive science if it inquires the facts only, nothing else. Okay, if you ask, give two material to a scientist and you ask what is this, he will say this is carbon, this is other item. So, as a positive science, economics also is concerned with inquiry of facts. That is, it is concerned with what is, what was. Okay, so inquiry of facts only. Don't give suggestion or solution. Don't give suggestion or solution. It inquires the fact. ये क्या है बता दिया, that's it. अब क्या करना चाहिए इकोनॉमिक्स को उससे मतलब नहीं है. बता देगा कि पर कैपिटा इनकम कंट्री का इतना है पॉजिटिव साइंस के रूप में. ये नहीं बताएगा फिर ये कि भाई पर कैपिटा इनकम को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसको कैसे और बढ़ाया जा सकता है. इट विल नेवर सजेस्ट. So, as a positive science, economics is concerned with inquiry of facts only, nothing else. Adam Smith, Leonard Robbins, and their followers tried to establish economics as a positive science. As a positive science, economics is just like a cricket umpire. What cricket says? Cricket क्या बोलता है? Umpire. Out or not out. If someone balls and he appeals क्या है, आउट है नॉट आउट है, तो क्रिकेट अंपायर क्या बोलता है? सिर्फ ये बोलता है आउट या नॉट आउट. कभी क्रिकेट अंपायर ये बोला है कि नहीं थोड़ा सा बॉल तुम अच्छा से कर लेते ना, बस तो ये तो आउट था, एलबीडब्ल्यू दे देते इसको. ऐसा कभी नहीं बोलता क्रिकेट अंपायर. बॉलर बोलता है हाउ इज दैट, तो बोलता है आउट या नॉट आउट. बैट्समैन बेचारा मारा बड़ा शॉट और बाउंड्री घुस पार गया, गिरा बाउंड्री रस्सी के पास, तो अब 6 है 4 है बोल देता है. ये नहीं बोलता है थोड़ा एलिवेशन ले लेते और तो बेटा ये छक्का चलाया था तुम्हारा. ऐसा कभी नहीं बोलता है. Okay, so as a positive science, economics is like a cricket umpire who gives decision only. What is, what was, क्या है बता देगा बस. क्या होना चाहिए ये नहीं बताएगा. एज ए पॉजिटिव साइंस इकोनॉमिक्स. सो जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स में थ्योरी बिल्डिंग की, जहां पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स बनते हैं, थ्योरीज बनते हैं, वहां पे इकोनॉमिक्स को एज ए पॉजिटिव साइंस ही ट्रीट किया. There we treat economics as positive science only. Okay. Now next is economics as normative science. देखो नाम में यह स्पष्ट है, नाम से यह स्पष्ट है कि नॉर्मेटिव, द सब्जेक्ट. नॉर्मेटिव मतलब व्हाट? द सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स पे बेस्ड है. ओके, तो एक किसी सब्जेक्ट को हम कैसे बोलेंगे कि वो नॉर्मेटिव है, क्या है उसका प्रीडिक्विजिट? तो a subject is referred as normative subject which on the one hand, 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 on the one hand,
inquires about the facts, whereas on the other hand gives सॉल्यूशन टू। यानी कि ये सिर्फ ये नहीं बताता है कि व्हाट इज या व्हाट वाज, ये भी बताता है कि व्हाट और टू बी क्या है, और साथ साथ ये भी बताता है कि क्या होना चाहिए इकोनॉमिक्स। ओके, सो ये क्या बोलता है, व्हाट इज तो बोलता ही है, व्हाट वाज तो इंक्वायर करता ही है, साथ साथ में ये बोलता है यह भी व्हाट शुड बी। ओके, सो एज ए नॉर्मेटिव साइंस इट गिव्स सॉल्यूशन ऑल्सो। सो एज ए नॉर्मेटिव साइंस, जो एज ए नॉर्मेटिव साइंस जो इकोनॉमिक्स है, एज ए नॉर्मेटिव साइंस जो इकोनॉमिक्स है वो क्या है, वो एक इज लाइक ए क्रिकेट कोच। एज ए नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक्स इज लाइक ए क्रिकेट कोच। क्रिकेट कोच क्या करता है, क्रिकेट कोच क्या है बताता है। मान लो बॉलर अपील करेगा तो बताएगा कि आउट है नॉट आउट है, पहली चीज। फिर वो बॉलर को बुलाता है, बाद में समझाता है, देखो तुम जो ये बॉल किए नॉट आउट हो गया, बैट्समैन नॉट आउट रहा, अगर तुम थोड़ा और इसको आगे टप्पा खिलाते बॉल को या पीछे लाइन में रखते तो ये आउट हो जाता। बैट्समैन को बोलता है कि तुमने जो शॉट मारा, तुम कैच पकड़े गए, तुम थोड़ा सा और आगे बढ़ के मारते, एलिवेशन देते तो ये बाउंड्री के बाहर होता, तुम्हारी कैच पकड़ी नहीं जाती। तो क्या बोलता है वो कोच, वो क्या है बताता है, साथ साथ सॉल्यूशन भी देता है। सो इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस नॉट ओनली इंक्वायर्स फैक्ट्स, it gives solutions also. So this is economics as a normative science. Alfred Marshall, particularly Alfred Marshall, who talked of human welfare, he tried to establish economics as a normative science. Okay, this was what we talk of economics as a positive and normative science. Next topic which we are supposed to discuss is very important topic, that is micro and macro economics. Micro and macro economics. आप देखते होंगे अपने सिलेबस में, क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। आप देख रहे होंगे अपने सिलेबस का पार्ट आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, देखो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सेगमेंटेशन है ये बहुत पुराना नहीं है, ये बहुत पुराना नहीं है। एक्चुअली एक इकोनॉमिस्ट थे, उनका व्हेन आई रिमेंबर हिज नेम ही वाज ऑफ नॉर्वे। यू नो स्कैंडिनेवियन नेशन, वेरी एडवांस्ड नेशन, उसका वहाँ का एजुकेशन काफ़ी एडवांस्ड है। नॉर्वे के ही इकोनॉमिस्ट थे वो। ज्योग्राफिकली वो काफ़ी रिच जगह है घूमने के लिए, जाने के लिए। ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज है, आप जाइए वहाँ पे घूमिए, नॉर्वे बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ओके, सो नॉर्वे के ही इकोनॉमिस्ट थे, उनका नाम था रेगनार फ्रिस्ट। नाम था रेगनार फ्रिस्ट, स्पेलिंग चेक कर रहे हैं अपना, RAGNAR, रेगनार FRISCH, रेगनार फ्रिस्ट।
रेगनार फिश ने पहली बार इस टर्म माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पहली बार टर्म यूज किया, माइक्रो और मैक्रो। इससे पहले नहीं था, कोई मैक्रो का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई टॉपिक ही नहीं था, कोई अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने नहीं बोला। लेकिन पहली बार रेगनार फिश ने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात की, इस टर्म को यूज किया। फॉर द फर्स्ट टाइम रेगनार फिश, a Norwegian economist, used this term micro and macro. This may be the question for multiple choice question for board examination, for competition also. In the year in which year he used? In the year 1993. देखो कितना पुराना तो नहीं है, बिल्कुल पुराना नहीं है। 1993 में, उससे पहले माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को अलग अलग करके नहीं पढ़ाया था। ओके, so for the first time in the year 1993, Ragnar Frisch used this term macro and micro economics. Okay, now come to the point. This macro and micro, one by one we will discuss. Now, what is this micro economics? Look, if you go for the vocabulary meaning, and actually its meaning is hidden here only. This micro is derived from the Greek word micros. This micro is derived from the Greek word micros. Its meaning is very small. Okay, so if you very small, if you try to, like in natural science nowadays nanoscience is there. Okay, nanoscience means what? If this chalk is made of the compound limestone is there, and smallest particle of the limestone, smallest particle, suppose this piece of chalk is there, you divide it into two parts. Okay, you divide it into two parts. Now further you can divide it, but the particle which cannot be further divided, that becomes the nano particle. Okay, so वहां भी तो नैनो साइंस आ गया आजकल नेचुरल साइंस में. Okay, so when you talk of microeconomics, it refers to the branch of economics which studies economic variables in individual. Okay, you can define that this microeconomics is the branch of economics which studies individual economic variables, For example, you talk of, for example, individual income. Okay, for example, equilibrium of an individual consumer. Okay, activity of a herb. So when it is the branch, microeconomics is the branch of economics which studies individual economic variable.
ये इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जहां इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स वेरिएबल को स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअलिटी में, टोटलिटी में स्टडी नहीं किया जाता है. Okay, so because economic variables are studied in individuality, that's why what happens here, a bit controlled study is possible. चूंकि इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स का स्टडी किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक कंट्रोल्ड स्टडी इकोनॉमिक्स का संभव हो पाता है. और कंट्रोल्ड इकोनॉमिक्स का स्टडी होने के कारण यहाँ पे हम थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स डेवलप करते हैं. इसीलिए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स जो था उसको थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स ही बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी आप पढ़े, आपके सिलेबस में है 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स. उसमें आप पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना होगा, वहाँ पे आप पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, कॉस्ट पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे. लेकिन एक यूनिक चीज होगा, ये सब इंडिविजुअल में पढ़ेंगे, एग्रीगेट में आप नहीं पढ़ेंगे. That's why theoretical economics is microeconomics known as, and here theory building is done. This is what we say microeconomics. Other is macroeconomics. Other is macroeconomics. One is microeconomics, other is macroeconomics. एक क्या हो गया माइक्रो और दूसरा क्या हो गया मैक्रो. So this is macroeconomics. This term macro is derived from the Greek word. Greek word. What is that Greek word? That Greek word is macros. Its meaning is large. Macros, which means large, big. That is macros. Okay. Now, when we say by name only, it is clear that जो बड़ा स्टडी करेगा, जो टोटलिटी में स्टडी करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स. तो डिफाइन क्या करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को? इट refers to the branch of economics. It refers to the branch of economics which studies economic variables aggregate or टोटलिटी. ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का जहां पे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को हम एग्रीगेट में स्टडी करते हैं, टोटलिटी में स्टडी करते हैं. ओके. इसीलिए यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में थ्योरी बिल्डिंग उतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्रीगेट में कंट्रोल स्टडी करना मुश्किल होता है. इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो थ्योरीज बनाए जाते हैं, जो डेवलप किए जाते हैं, उनको मैक्रो इकोनॉमिक्स में अप्लाई किया जाता है. दैट्स व्हाई मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स. क्या बोलते हैं इसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स. क्या बोले? अप्लाइड इकोनॉमिक्स. ओके. सो यहाँ पे एग्रीगेट में, वहां पे माइक्रो में हमने क्या देखा? इंडिविजुअल इनकम. माइक्रो में क्या देखा हमने? इंडिविजुअल इनकम. मैक्रो में क्या देखेंगे हम? नेशनल इनकम, या बोलो तो एग्रीगेट इनकम. नेशनल इनकम या एग्रीगेट इनकम इन मैक्रो वी विल टर्न. ओके. देयर इंडिविजुअल इनकम था,
ओके, उस तरह से वहां क्या था आपका ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम। यहां पे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ इकोनॉमी। यहां पे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ economy. What we say? We say equilibrium of economy here in macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं, माइक्रोइकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी टॉक ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो हमने क्या देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में वेयर वी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि दे देगा गिव 5 सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, दे देगा 5 सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक ट्रिक, जो तुम्हारा बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जितने भी टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें रट लो माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया, जितना भी पढ़ना है मैक्रो में मैक्रो का हो गया। लेकिन नहीं, समझना ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स आर स्टडीड इन इंडिविजुअलिटी, whereas in macroeconomics economic variables are studied in totality. अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि ये एक रिलेटिव टर्म है, ये एक रिलेटिव टर्म है। एक टॉपिक जो एक जगह माइक्रो का सब्जेक्ट मैटर है वो हो सकता है दूसरी जगह मैक्रो का सब्जेक्ट मैटर हो जाए। अगर मेरा स्टडी ऑफ एरिया ऑफ स्टडी है माय क्लासरूम, in classroom, ये मेरा क्लासरूम है, this is my classroom, okay, classroom, and here one boy is there, 2 boys there, 3 boys there, 4 boys there, 5 boys are there. Okay, total 5 boys are there in my classroom. So if I have to study this classroom, then this one particular boy, if I study of this one particular boy, he is the subject of micro, and whole class is the subject matter of मैक्रो। क्या, जब मुझे एक पर्टिकुलर क्लास का स्टडी करना है, एक बच्चा माइक्रो हो गया और पूरा क्लास क्या हो गया, मैक्रो हो गया। लेकिन मुझे अगर पूरे स्कूल को स्टडी करना है, इसमें तो स्कूल में कई सारे क्लास होंगे, तो एक क्लास क्या हो जाएगा, माइक्रो, और सारे क्लास पूरा स्कूल मिलके मैक्रो। लेकिन मुझे अगर पूरे शहर का स्कूल स्टडी करना है तो वहां पे मेरा एक स्कूल माइक्रो और पूरे शहर का स्कूल मैक्रो हो जाएगा। ये जब आप प्रैक्टिकल में पढ़ाई करने जाते हो, जब स्टडी करने जाते हो, तो रिसर्च करने जाते हो, तो आपका ओरिएंटेशन क्या है, आपका पर्पस क्या है, उसके अनुसार माइक्रो और मैक्रो डिफाइन होता है। दैट्स व्हाई इट इज रिलेटिव एंड somehow with the purpose and objective it differs. But definition, as far as concerned, microeconomics is the part of economics in which economic variables are studied in individuality, and macro is the part of economics in which economic variables are studied in aggregate. In microeconomics, what work goes on? In microeconomics, theory building work goes on. In macroeconomics, application of that theory is done. So, microeconomics is known as theoretical economics and macroeconomics is known as applied economics. Who used this term micro and macro for the first time? Ragnar Frisch used this term micro and macro for the first time in the year 1993. So, this is the end of micro and macro economics. देखो जब वीडियो लेक्चर देखोगे तो
टाइम टू टाइम पॉज करके लिखते जाओगे। वीडियो लेक्चर काफ़ी बेनिफिशियल है। हम लोगों ने के समय में इतना तो ये था नहीं यूट्यूब और वीडियो लेक्चर, लेकिन अब है कुछ कुछ टॉपिक जो है स्टडीज़ का हम लोग पढ़ते हैं तो साथ में नोटबुक लेकर बैठते हैं और पॉइंट ये लगा पढ़ लिया, क्या मैंने समझा उसको तुरंत पॉज करते हैं और लिख लेते हैं। फिर आगे पढ़े सुने उनको, फिर लगा ये पॉइंट समझ में आ गया, फिर पॉज किया लिख लिया। तो क्या है कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग वट एवर आई एम डिलीवरिंग, यू आर राइटिंग दोज थिंग्स इन योर ओन लैंग्वेज, and your own language, your words are familiar to you and it remains in your memory for longer period of time. This is the way how you take advantage of a video lecture. Many lectures on YouTube, these are available and you can take advantage of that. World class lecture, Harvard's lecture you can go through, London School of Economics lecture you can go through, Delhi School of Economics lecture you can go through. There is no limit now for those who wish to study. हाँ, जरूरत है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अगर पढ़ने की इच्छा आप में है, आप पढ़ना चाहते हैं तो you can make use of. If you don't like, कोई कुछ नहीं कर सकता है। Okay, choice is yours. Now, next है इकोनॉमी। देखो एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम जो जानोगे उससे पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि इकोनॉमी क्या होता है। बिना इकोनॉमी को जाने हुए आप इकोनॉमिक सिस्टम को नहीं जानते। इट इज नॉट पॉसिबल, क्वाइट इम्पॉसिबल कि आप इकोनॉमिक सिस्टम को जान लें इकोनॉमी को समझे बिना। ये संभव ही नहीं है। ये इकोनॉमी है क्या? देखो जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया, और फिर बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इंडिया, और फिर बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी। क्या अंतर है दोनों? what are the differences between India and Indian economy? दोनों एक चीज तो है नहीं। ओके, सपोज हम बात करते हैं इंडिया की। वी टॉक ऑफ इंडिया। ओके, वी टॉक ऑफ इंडिया। सो आई एम वेरी पुअर इन ड्राइंग मैप, सो मैं मान लेता हूं कि ये मेरा इंडिया है। ओके, तो यहाँ पे इंडिया जब जानते हो तो तुमको उसका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, इंडिया का हिस्ट्री है, इंडिया का कल्चर है, इंडिया का पॉपुलेशन है। ओके, इंडिया में रहने वाले लोगों का, इंडिया का रिलीजन कोई नहीं, इंडिया में रहने वाले लोगों का रिलीजन है। ओके, इंडिया का जो पॉलिटी है, इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं वो सारा कुछ है। तो इंडिया में इंडिया का ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, पॉलिटी ऑफ इंडिया, कल्चर ऑफ इंडिया, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया, दीज ऑल टुगेदर मेड इंडिया। So when you refer India, you refer to geographical aspect of India, you refer to political aspect of India, you refer to historical aspect of India, you refer to cultural aspect of India, you refer to social aspect of India, you refer to economic aspect of India. So India is a broad term, very broad term India is. You refer all those terms. But when you say Indian economy, then you refer to economic aspect only. You refer to economic aspect of India only. That is what you say Indian economy. So when you say Indian economy and economic aspect, so every type of economic activities, primary economic activities, secondary economic activities, and tertiary economic activities you have discussed in class 9th and 10th.
What are primary economic activities, what are secondary economic activities, and what are tertiary economic activities. So when you say economy, this term, if you try to define economy, it will be as follows. All economic activities performed within a structured framework are referred as an इकोनॉमी. मतलब कि जब सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क में परफॉर्म किए जाते हैं, when all economic activities are performed in structured framework, suppose all economic activities being performed within geographical boundary of India, they are the part of Indian economy. So when you say Indian economy, means all economic activities being performed in India, that is what we say Indian economy. Similarly, if you say US economy, then all economic activities being performed in USA, that is US economy. So it is clear to you now what is economy? Economy means it refers to economic aspects of a country. When you say US economy, when you say Indian economy, when you say British economy, so when we say Indian economy, we refer to economic aspect of India. When we say US economy, we refer to economic aspect of USA. When we say British economy, we refer to economic aspect of USA. Okay, this is what the meaning of an economy. Now, there are different type of economy. Actually, this classification of economy is based on different parameters. In class 10, you have discussed this. Okay, like economy is classified on different basis. Number one basis is on the basis of economic activities performed. Another is ownership and control, and another is organization of economic activities. One is economic activities performed like sectors. When you talk of the primary sector, secondary sector, tertiary sector, primary economy, secondary economy, tertiary economy, ownership, private, public and joint, and organization means organized and unorganized. But here in class 11 and further also, you are concerned with economy on the basis of ownership of economic resources and control of economic activities. This is on the basis of ownership of economic resources and control of economic activities on the basis of ownership of economic resources and control of economic activities, and economy is classified under following
थ्री हेड्स। वो तीन हेड कौन कौन सा है? ये तीन हेड्स कौन कौन सा है, किस किस तरह का है? पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला है सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब देखो, पहला सोशलिस्ट इकोनॉमी, फर्स्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, it refers to the economic system in which economic resources are owned and economic activities are controlled by state. क्या बोलते हैं? It refers to the economic system in which, socialist economy की बात मैं कर रहा हूँ. It refers to the economic system in which economic activities are controlled and economic resources are owned by state यानी government. So क्या हुआ? State controls economic activities or state owns economic resources. State controls economic activities and state owns economic resources. दोनों राज्य के पास होता है क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ओन करना, ये स्टेट ओनरशिप होता है। ओके, यहाँ पे जो डिसीजन होता है, डिसीजन जो लिया जाता है, यहाँ पे एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है। एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, वो सारा डिसीजन लेती है और बाकी को फॉलो करना होता है। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कंट्रोल और प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रली कंट्रोल और प्लान इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसीजन लेती है, वही प्लान करती है, और जो प्लान बनेगा उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए बाकी मैकेनिज्म काम करेगा। ओके, दिस इज व्हाट वी से सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सोशलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमी का? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। इसका ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का वेलफेयर पहुंचाया जाए। प्रोविजन ऑफ मैक्सिमम सोशल वेलफेयर इज द प्राइमरी एंड अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट। ओके, जैसे अब तो है नहीं, आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, लेकिन रसिया है या क्यूबा या चाइना, ये लोग माने आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, लेकिन अब ये प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी आपको नहीं मिलेगा, प्योर कैपिटलिस्ट भी नहीं मिलेगा। फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो सोशलिस्ट हो गया वैसा इकोनॉमी जहां इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्टेट के हाथ में होता है,
इकोनॉमिक एक्टिविटीज कंट्रोल स्टेट करती है और जिसका सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सारा डिसीजन लेती है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर, दैट इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसका ठीक उल्टा है व्हाट वी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ओके। सेकेंड इज capitalist what is capitalist economy? It refers to the economic system in which economic resources are owned and economic activities are controlled by individual or group of individuals। मतलब इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन एंड कंट्रोल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। Individual or group of individuals own and control economic activities. This is what we say capitalist economy. Okay, यहाँ पे क्या होता है, जितना भी डिसीजन होता है कंट्री में, वो मार्केट को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जैसे देखो अभी कोविड में सैनिटाइजर और मास्क बनाने की बात, देखो कि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो डाबर हो, चाहे हिमालय हो, चाहे पतंजलि हो, चाहे रिकेट बेंकाइजर हो, सब ने क्या किया, सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। वैन हुसैन, पीटर डुगलैन, एलन सॉली, इन ब्रांडों ने मास्क बनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में इसका डिमांड है। देयर इज डिमांड ऑफ दीज प्रोडक्ट्स इन मार्केट। सो ये जो भी डिसीजन यहाँ पे होता है मार्केट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो मार्केट में डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। मतलब all decisions are taken on the basis of the functioning of market मैकेनिज्म। ये मार्केट मैकेनिज्म आगे जाके पढ़िएगा आप लोग। व्हाट इज दिस मार्केट मैकेनिज्म? इंटरैक्शन बिटवीन डिमांड फोर्सेज ऑफ मार्केट एंड सप्लाई फोर्सेज ऑफ मार्केट। और जहां इक्विलिब्रियम होगा, दोनों में इक्विलिब्रियम, वही डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द इन फंक्शनिंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई दिस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज मार्केट, is also known as market economy. It is also known as market economy. Okay, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसको मतलब नहीं है सोशल वेलफेयर से, इसको मतलब है कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हम अर्न करें, इससे मतलब है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ओके, सो दिस इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, देखो मिक्स्ड इकोनॉमी वेरी सिंपल, जहां पे कि दोनों एलिमेंट है, कैपिटलिस्ट एलिमेंट भी है और सोशलिस्ट एलिमेंट भी है। बोथ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सो व्हेन वी टॉक ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी,
When you talk of mixed economy, means joint ownership of economic resources. क्या हो गया पहला? जॉइंट ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, नंबर वन. एंड नंबर टू इज जॉइंट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जॉइंट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहां पे दोनों एक साथ इकट्ठे होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी. प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का जॉइंट ओनरशिप होता है. प्राइवेट और पब्लिक का, यानी कि दोनों सेक्टर एक साथ काम करते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ सरकारी रहेगा, नहीं, प्राइवेट भी रहेगा, सरकार दोनों रहेगा. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो एक बैलेंस, क्या बैलेंस between social welfare and profit मेकिंग. ये सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मेकिंग के बीच में एक बैलेंस है. देखो एक्चुअली में अगर तुम बात करोगे ना, यू विल नॉट गेट प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स नो प्रेजेंस ऑफ स्टेट. Role of state is limited to protection of country from external aggression and maintenance of internal peace and security. मतलब बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना और इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना. जब अगर इतना ही सरकार का रोल हो, बाकी प्योर प्राइवेट सेक्टर में हो, तो उसको बोलते हैं लेसेस फेयर इकोनॉमिक सिस्टम. क्या बोलते हैं? लेसेस फेयर इकोनॉमिक सिस्टम. लेसेस फेयर इकोनॉमिक सिस्टम. प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये नहीं मिलेगा. प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां प्राइवेट हो ही नहीं मिलेगा. रियलिटी, व्हाट इज रियलिटी नाउअडेज? रियलिटी इज प्रेजेंस ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, प्रेजेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर. जहां प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ में है, दैट इज द रियलिटी. तो किस आधार पे हम कहेंगे कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है? जहां पे मान लो 50-50% प्राइवेट का शेयर का रोल है, 45% पब्लिक का 55%, तो मान लेते हैं उसको कि लगभग बराबर है, तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया. जहां गवर्नमेंट का 80% रोल है या 75% रोल है और प्राइवेट का रोल है 25%, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया. जहां स्टेट जहां पे गवर्नमेंट का 75% रोल और प्राइवेट का 25% ही रोल, यानी कि मेजोरिटी रोल प्लेड बाय गवर्नमेंट, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी. जहां मेजोरिटी रोल प्लेड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, वो हो गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. पूरे वर्ल्ड में आज के डेट में मोस्टली आपके पास या तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या मिक्स्ड इकोनॉमी है. ये either mixed economy is there or capitalist economy is there. यहाँ पूरे वर्ल्ड में आपके पास प्योर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, प्योर सोशलिस्ट इकोनॉमी नहीं है. तो आज यहीं पे खत्म करते हैं. एक टॉपिक हमारा था जो कि ये central problems of economy. So next lecture we will continue with central problems of economy and other topics. Okay, so this is enough for today. Thank you.